Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. In today's video, we are going to discuss section number 63 to 73 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो सेक्शंस जो कि फ्रैंकली गेम चेंजर्स हैं, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 64। ये दोनों सेक्शंस रेप लॉ से डील करते हैं, तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, आप सभी जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सेक्शंस एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। मैं इस पर बहुत जोर दे रही हूँ। सो लेट्स मेक श्योर कि हम इन प्रोविजंस को एकदम एग्जाम फोकस्ड पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन। सेक्शन 63। ये सेक्शन इन सिंपल वर्ड्स हमें रेप के ऑफेंस की कंप्लीट डेफिनेशन देता है। मतलब ये हमें A to Z बताता है कि आखिर कौन से एक्ट्स रेप माने जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन सर्कमस्टांसेस में माने जाएंगे। ओके, सो अंडर सेक्शन 63 लॉ ने 4 स्पेसिफिक एक्ट्स को डिफाइन किया है जो रेप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट है पीनाइल पेनिट्रेशन, सेकेंड इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट, ध्यान दीजिए एनी ऑब्जेक्ट। थर्ड है किसी भी तरह से बॉडी को मैनिपुलेट करना जिससे पेनिट्रेशन हो सके, एंड फोर्थ ओरल सेक्सुअल एक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि लॉ ने इस डेफिनेशन का स्कोप कितना ब्रॉड रखा है, कुछ भी एम्बिग्युइटी नहीं छोड़ी। अब ये जो एक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए, ये अपने आप में रेप नहीं है। ये रेप तब बनते हैं जब इन 7 में से कोई भी एक सर्कमस्टेंस मौजूद हो। फॉर इंस्टेंस, अगर एक्ट अगेंस्ट हर विल यानी उसकी मर्जी के खिलाफ हो, या विदाउट हर कंसेंट यानी उसकी सहमति के बिना हो। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, अगर विक्टिम की एज 18 साल से कम है, इस केस में उसकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती, इट्स लीगली इररेलेवेंट। सो इस पूरे डिस्कशन का जो कोर है, जो सबसे क्रिटिकल लीगल एलिमेंट है, वो है कंसेंट। तो अब हमारा फोकस इस पर होगा, आखिर BNS के अंडर कंसेंट का मतलब क्या है, लॉ इससे कैसे देखता है। सेक्शन 63 में एक एक्सप्लेनेशन है जो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। कंसेंट का मतलब है, एंड प्लीज रिमेंबर दीज वर्ड्स, अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट। अनइक्विवोकल मतलब बिल्कुल क्लियर, जिसमें कोई डाउट ना हो। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, और ये अग्रीमेंट वर्ड्स, जेस्चर्स या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से दिया जा सकता है। बेसिकली इट हैज़ टू बी अ क्लियर येस। और यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट इन जनरल। लॉ इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। सिर्फ इसलिए कि विक्टिम ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया, इसका मतलब कंसेंट बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंस कैन नेवर बी इंटरप्रेटेड एज कंसेंट। एब्सेंस ऑफ अ नो इज नॉट अ येस। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक लीगल मैक्सिम है जो काफी हेल्पफुल है, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका सिंपल सा मतलब है, टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज नॉट डन। मतलब अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी चीज के लिए हाँ कहता है, तो उस एक्ट से होने वाले नुकसान को लीगली इंजुरी नहीं माना जाता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बट है, अगर वो कंसेंट जोर जबरदस्ती से, धोखे से या नशे की हालत में ली गई हो, तो वो वैलिड कंसेंट है ही नहीं। ऐसे केसेस में वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। द कंसेंट हैज टू बी फ्री एंड रियल। Okay, so we've understood the definition of the crime under Section 63. अब let's move on to the consequences. Section 64 क्या कहता है? ये सेक्शन इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट की बात करता है। देखिए, सेक्शन 64 में पनिशमेंट का एक 2 लेवल स्ट्रक्चर है। पहला लेवल है जिसे हम ऑर्डिनरी रेप कह सकते हैं, इसकी पनिशमेंट सेक्शन 64(1) में दी गई है। और दूसरा लेवल है एग्रेवेटेड रेप, जिसके लिए सेक्शन 64(2) में बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्हांस्ड पनिशमेंट है। तो ये एग्रेवेटेड रेप क्या है? इस कैटेगरी में वो केसेस आते हैं जहां ऑफेंडर किसी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का गलत फायदा उठाता है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट, या फिर जब विक्टिम किसी वजह से ज्यादा वल्नरेबल हो, फॉर एग्जाम्पल अ प्रेग्नेंट वुमन या पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसे केसेस को लॉ ज्यादा सीरियसली लेता है। चलिए आप पनिशमेंट की डिटेल्स देखते हैं। ऑर्डिनरी रेप के केस में मिनिमम सजा है 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ध्यान दीजिए, रिगरस। इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ फाइन भी लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं एग्रीवेटेड रेप पर।
यहाँ पनिशमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। मिनिमम तो 10 साल ही है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब है उस इंसान की बाकी की पूरी जिंदगी जेल में, फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये प्रोविजन दिखाता है कि लॉ ऐसे क्राइम्स को कितनी गंभीरता से देखता है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। हम कुछ ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया में रेप लॉ को, हमारे समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे पहले तुकाराम वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम सब मथुरा रेप केस के नाम से जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट्स हुए। और उन्हीं प्रोटेस्ट का नतीजा था कि हमारे रेप लॉज में, खास करके कंसेंट की डेफिनेशन में, बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए। नेक्स्ट अप, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। ये एक बहुत ही पावरफुल जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि अगर रेप सर्वाइवर की टेस्टिमोनी, उनकी गवाही, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है, तो सिर्फ उनकी गवाही के बेसिस पर, सोल टेस्टिमोनी पर कन्विक्शन हो सकता है। दिस वाज अ ह्यूज स्टेप। और फिर ऑफ कोर्स मुकेश वी स्टेट, यानी निर्भया केस। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि रेप सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि एक इंसान के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है और इसके लिए सबसे कठोर सज़ा ज़रूरी है। ऑलराइट, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब इस सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली रैप अप करते हैं, एक फास्ट रिविजन करते हैं। अगेन, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ओल्ड लॉ वर्सेस न्यू लॉ का कंपैरिजन। पहले ये सारे प्रोविजंस आईपीसी के सेक्शन 375 एंड 376 में थे। अब बीएनएस में ये सेक्शन 63 और 64 बन गए हैं। प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, लेट्स ट्राई अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मेंस में आ सकता है। सोचिएगा इसके बारे में। मान लीजिए ए ने एक 17 साल की लड़की के साथ इंटरकॉर्स किया और उस लड़की ने वर्बली कंसेंट भी दिया था। सवाल है, क्या ए ने रेप कमिट किया है? सोचो। द आंसर इज अ क्लियर येस। क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, सेक्शन 63 के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के विक्टिम की कंसेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है, इट्स इनवैलिड। तो फॉर अ सुपर क्विक रिविजन, बस ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। फर्स्ट, सेक्शन 63, ये है डेफिनेशन ऑफ रेप। सेकेंड, सेक्शन 64, ये है पनिशमेंट। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस पूरे ऑफेंस का दिल, एब्सेंस ऑफ वैलिड कंसेंट। अगर आपको ये 3 चीजें याद हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। So that was our detailed look at sections 63 and 64 of the BNS. For more such crucial legal content focused on judiciary, APO, and other law exams, make sure you stay connected with us here at Ganga Education. Today, we're diving deep into 2 of the most critical sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. I'm talking about Section 65 and Section 66. Now, these sections deal with what are known as aggravated forms of rape. For anyone preparing for judiciary and APO exams, understanding these isn't just important, it's absolutely essential. So let's get right into the detailed breakdown. So, this raises a really important question. What are the strict punishments for crimes against children under the new BNS? Well, the answer to that lies within the powerful provisions of Sections 65 and 66, which is exactly what we're going to explore in detail today. You'll find both of these sections under Chapter 5 of the BNS, which is titled Offences Against Women and Children. The fact that this is a separate chapter shows a clear shift in legislative intent. What this really means is that there's now a dedicated legal focus on protecting vulnerable victims, and that includes enhanced safeguards and much, much stricter punishments. The thinking behind these tough laws is crystal clear. You see, the law explicitly recognizes that minors are uniquely vulnerable to sexual exploitation. Therefore, these sections really have 2 main goals. First, to give them stronger legal protection than what's available for other crimes. And second, to create a powerful deterrent, to really put the fear of the law into potential offenders. All right, let's start by analyzing Section 65. This section specifically lays out the enhanced punishments for the rape of minor girls. And to determine the right punishment, the law has strategically divided this section into 2 parts based on the victim's age. So, Section 65, subsection 1, covers cases where the victim is below the age of 16. But then, things get even more serious with Section 65, subsection 2, which applies when the victim is below the age of 12.
This age-based distinction is incredibly important because the severity of the punishment directly depends on it. Now let's compare the punishments. In both situations, the minimum sentence is 20 years of rigorous imprisonment. The maximum sentence is life imprisonment, which means the convict will remain in jail for their entire natural life. But, and this is the most crucial point, look at Section 65(2). When the victim is under 12, the court has the power to go beyond life imprisonment and impose the death penalty. A fine is also mandatory under this section, and it serves a very specific purpose. It has to be just and reasonable enough to cover the victim's medical treatment and rehabilitation costs, and importantly, this amount has to be paid directly to the victim. This provision clearly shows the law's growing focus on principles like victim compensation and restorative justice. This brings us to a very important legal concept called statutory rape. What this means is that in the eyes of the law, a minor is legally incapable of giving valid consent to sexual activity. So even if the minor said yes, it is still considered rape. Their consent is legally irrelevant. The Supreme Court reinforced this principle in the landmark judgment of State of MP versus Madan law. The court made it very clear that the rape of a minor isn't just a crime against the victim, it's a grave offense against society as a whole. Because of this, courts are required to adopt a strict approach in sentencing and must not show any undue sympathy towards the convict. Building on that foundation of enhanced punishment, Section 66 deals with the most horrific consequences of rape. This section comes into play when the brutality of the sexual assault is so extreme that it either causes the victim's death or leaves her in what's called a persistent vegetative state. So what exactly is a persistent vegetative state, or PVS? It's a severe neurological condition where the victim is technically alive, but is permanently unconscious due to brain damage. In this state, the person is unable to communicate or respond to anything at all. To secure a conviction under Section 66, the prosecution needs to prove a chain of 3 essential elements. First, that the offense of rape, as defined in Section 63, was committed. Second, that during this act, the offender inflicted serious injury on the victim. And third, that this specific injury resulted in the victim's death or led to them entering a persistent vegetative state. As you would expect, the punishment for this crime is extremely severe. The minimum sentence is 20 years of rigorous imprisonment. The maximum is imprisonment for the offender's natural life. And once again, the court has the discretion to impose the death penalty. Okay, let's shift our focus a bit to be more exam-oriented. We'll take a look at the landmark cases and legal comparisons that are really important for your judiciary and APO mains. To truly understand the application and gravity of Section 66, there is no case more significant than Mukesh versus State, which is widely known as the Nirbhaya case. This case fundamentally changed the legal landscape for such heinous crimes in India. In its judgment, the Supreme Court used incredibly powerful words, stating, "The crime was extremely brutal and shocked the collective conscience of society. This means the crime was so cruel that it shook the entire nation to its core." The central legal issue in this case was determining the appropriate punishment for a rarest of rare case of extreme sexual violence. The Supreme Court upheld the death penalty awarded to the convicts. In doing so, the court stressed the need for deterrent punishment in cases of such extreme brutality in hopes of preventing such acts in the future. Let's do a quick comparative analysis of these sections. Section 64, which covers the standard offense of rape, carries a minimum of 10 years. In Section 65(1), for a victim under 16, that jumps to 20 years. Then in Section 65(2) for a victim under 12, and in Section 66 for cases causing death or PVS, the minimum stays at 20 years, but the crucial option of the death penalty is added. This table really shows you the escalating scale of punishment in the law. For all the judiciary aspirants out there, it's also vital to know how these new BNS sections correspond to the old IPC. Section 65 of the BNS corresponds to Sections 376(3) and 376(a)(b) of the old IPC, and Section 66 of the BNS replaces the old Section 376(a) of the IPC. Now for some very specific exam tips. In your prelims, it's very common to see direct questions on the minimum punishment under Section 65 and 66. You might also be asked for the definition of persistent vegetative state. For the mains, definitely expect a problem-based question involving statutory rape. And remember, whenever you're writing an answer on the deterrent theory of punishment, citing the Nirbhaya case is absolutely essential. For a quick revision, just remember these 3 things. First, Section 65 deals with the rape of minors, with the death penalty possible for victims under 12.
Second, Section 66 deals with rape causing death, or PVS, where the death penalty is also possible. And third, the core concept behind both is to provide enhanced protection to vulnerable victims through stringent deterrent punishments. Their exam importance is, without a doubt, very high. So what's the ultimate takeaway from all of this? Well, these sections represent a significant evolution in Indian criminal law. The focus of the law is shifting away from just punishing the offender to a more holistic approach that gives the highest priority to victim rights, child protection, and societal justice. For more judiciary, APO, and other law exam-focused legal content, please stay connected with us here at Ganga Education. आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे। सेक्शन 67, 68 और 69। ये सेक्शंस उन सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करते हैं जो रेप की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से तो बाहर हैं, लेकिन लीगल सिस्टम में इनकी अपनी एक खास जगह है। देखिए, इन सेक्शंस में जो कॉमन थ्रेड है वो है कंसेंट। या तो कंसेंट है ही नहीं, या फिर उसे जबरदस्ती, अथॉरिटी या धोखे से हासिल किया गया है। सो फॉर योर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जाम्स, इन तीनों के बीच का जो सटल डिफरेंस है उसको समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यही आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आगे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 67 से। ये सेक्शन एक बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियो को एड्रेस करता है। एक हस्बैंड द्वारा अपनी ही वाइफ के साथ उसकी मर्जी के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जब वो दोनों अलग रह रहे हैं। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये है कि लॉ एक वाइफ की बॉडली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है, इवन विद इन अ मैरिज। जब एक कपल सेपरेट हो जाता है, फिर चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से हो या आपसी सहमति से, तो पति का ये राइट खत्म हो जाता है। कंसेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी केस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एस्टैब्लिश करनी होंगे। पहला, कि जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम का हस्बैंड है। दूसरा, कि वो उस वक्त सेपरेशन में रह रहे हैं। तीसरा, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्ट हुआ है। और चौथा, जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, कि ये एक्ट वाइफ की मर्जी के खिलाफ यानी उसकी कंसेंट के बिना हुआ था। सो इस ऑफेंस के लिए सजा क्या है? वेल, सेक्शन 67 में पनिशमेंट का प्रोविजन है। इसमें कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन का भी प्रावधान है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 68 पर और देखते हैं कि लॉ इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सपैंड करता है। ये सेक्शन उन सिचुएशन से डील करता है जहां कोई इंसान अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है। इस सेक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं विशिएटेड कंसेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर टेक्निकली कंसेंट दी भी गई हो तो लॉ उसे वैलिड नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो कंसेंट एक पावर इम्बैलेंस के चलते दी गई है। वो फ्री कंसेंट नहीं है। वो सबमिशन हो सकता है पर कंसेंट बिल्कुल नहीं। इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए। अक्यूज्ड एक ऐसी पोजीशन पर होना चाहिए जहां उसके पास अथॉरिटी या ट्रस्ट हो, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट, जेलर या हॉस्पिटल का स्टाफ। फिर उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके एक ऐसी महिला को इंड्यूस या सिड्यूस किया हो जो उसकी कस्टडी या सुपरविजन में है। और हाँ, ये एक्ट सेक्शन 63 के अंडर रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पनिशमेंट सेक्शन 67 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मिनिमम 5 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है, जो इस ऑफेंस की ग्रेविटी को बहुत बढ़ा देता है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, सेक्शन 69। ये सेक्शन उन केसेस को एड्रेस करता है जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट धोखे से या झूठे वादे करके हासिल की जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो आपको कोर्ट्स में देखने को मिलेगा। इसका कोर कॉन्सेप्ट है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, शादी का झूठा वादा करना या फिर नौकरी दिलाने का झूठा लालच देकर कंसेंट लेना। यहाँ कंसेंट तो है लेकिन वो धोखे पर बेस्ड है, इसलिए वो लीगली वैलिड कंसेंट बिल्कुल नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंशन। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि आरोपी का इरादा शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वादा पूरा करने का नहीं था। द प्रॉमिस वॉज फॉल्स फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। अगर किसी ने पूरी सिंसेरिटी से वादा किया लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस बदल गए तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। सेक्शन 69 के अंडर इस ऑफेंस के लिए 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन का प्रोविजन रखा गया है। ये इस एक्ट की गंभीरता को साफ दर्शाता है।
ओके, तो अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशल पार्ट पर। ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों सेक्शंस का कंपैरेटिव एनालिसिस। इससे आपको इनका जो यूनिक लीगल पर्पस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज़रा इस टेबल को ध्यान से देखिए। सेक्शन 67 का की एलिमेंट है लैक ऑफ कंसेंट जब पति पत्नी अलग रह रहे हों, सिंपल। सेक्शन 68 का की एलिमेंट है अब्यूज ऑफ पोजीशन और सेक्शन 69 का की एलिमेंट है फ्रॉड और फॉल्स प्रॉमिस। बस इन की एलिमेंट्स को याद रखिए और आप इन सेक्शंस को कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेक्शन 68 के कंटेक्स्ट में स्टेट ऑफ पंजाब वे गुरमीत सिंह का केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्कुल साफ कहा कि जब कोई अथॉरिटी पोजीशन में बैठा व्यक्ति सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है तो ये पावर का एक ग्रेव अब्यूज है और इससे सख्ती से ही डील करना जरूरी है। और सेक्शन 69 के लिए उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसी लीगल प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर शादी का वादा शुरू से ही झूठा था तो उस आधार पर ली गई कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। द इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। राइट, चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेट करते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या याद रखना ही रखना है। देखिए, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सेक्शन नंबर्स, उनकी पनिशमेंट्स या की एलिमेंट्स पर बेस्ड सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट इन मेंस आपको इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने या एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा और क्यों। अपने आंसर्स को उदय वी कर्नाटका जैसे लैंडमार्क केसेस से सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखिए। सेक्शन 67 हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन, key element lack of consent. Section 68 person in authority, key element abuse of position. और section 69 deceitful means, key element false promise. और हाँ, इनके punishments भी ध्यान में रखिए। So ये था section 67, 68 और 69 of BNS का एक detailed explanator. I really hope इससे आपके सारे concepts clear हो गए होंगे। For more judiciary, APO and law exam focused legal content, stay connected with Ganga Education. So today, we're going to dive into Sections 70 and 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. These sections deal with the punishments for gang rape and for repeat offenders. Now, these are some of the most stringent provisions in the entire BNS, which makes understanding them absolutely crucial for your judiciary and APO exams. You know, to really grasp the seriousness of these sections, let's start with this powerful observation from the Supreme Court. The law doesn't just see these crimes as physical violence. It views them as a fundamental attack on a woman's dignity and honor. This very legal philosophy is the foundation for the severe penalties in Sections 70 and 71, which exist to provide the strongest possible protection. All right, so let's kick things off with Section 70, which deals with the offense of gang rape. We're going to break down its definition and key elements in detail, so pay close attention because this is a high priority topic for your mains examination. So what's the core legal definition here? Well, in simple terms, it's when a woman is raped by a group of people who are acting with a common intention. Now, there are 2 phrases you absolutely have to remember here: group of persons and common intention. The law's focus isn't just on the individual act, but on the collective criminal enterprise itself. Okay, to prove gang rape in court, the prosecution has to establish these 3 essential ingredients. First, group of persons simply means 2 or more individuals. Second, common intention means that all of them shared the same criminal objective. And this brings us to the third and most crucial legal principle, joint liability. This means every single member of the group is considered equally guilty of the crime, whether they physically committed the act of rape or not. Let's make this crystal clear with a practical exam-style scenario. Imagine a situation with 3 people involved. One person commits the rape, while the other 2 hold the victim down. Because they all shared a common intention, the principle of joint liability kicks in. This means all 3 will be convicted for gang rape under Section 70. It's a classic example of how the law treats all participants in a collective crime equally. Okay, so we've understood the crime. Now let's talk about the punishment under Section 70. The law here establishes 2 separate sentencing frameworks, and the difference depends on one critical factor: the age of the victim. This is a very important point, and you'll often see questions on this in the prelims. So if the victim is an adult, that means over 18 years old, the punishment is a minimum of 20 years of rigorous imprisonment, which can extend to life imprisonment for their natural life. But, and this is a huge but, if the victim is a minor, under 18,
The punishment becomes far, far more severe. The court has only two options: life imprisonment for natural life, or the death penalty. This clear split in punishment based on the victim's age is a crucial aspect of Section 70. But it's not just about imprisonment. Section 70 also has a mandatory provision for victim compensation, and this is a really critical, welfare-oriented feature. The law says the court has to impose a just and reasonable fine, which is meant to cover the victim's medical expenses and rehabilitation. And most importantly, the entire amount of that fine is paid directly to the victim. Any discussion on gang rape laws in India is incomplete without talking about the landmark Nirbhaya case. This observation from the Supreme Court that the crime shocked the collective conscience of society perfectly captures the public impact that drove significant legal reforms in this area, the effects of which we see today in the BNS. So in the Mukesh v. State case, the Supreme Court upheld the death penalty for the accused. Their reasoning was that the extreme brutality of the offense placed it in the rarest of rare category, which is the legal standard for capital punishment. Citing this case is critical when you discuss the death penalty for gang rape in your mains answers. So this brings us to a logical next question, right? Section 70 addresses a crime committed by a group. But what happens if an individual who has already been convicted of rape goes on to commit this offense again? How does the BNS deal with these repeat offenders? Well, the answer to that question lies in Section 71 of the BNS. This provision is specifically designed to address recidivism, basically the tendency of a convicted criminal to re-offend. It targets those individuals who are not deterred even by a prior conviction for a serious sexual offense. So, how does Section 71 actually work? Think of it as having a clear three-step trigger. First, there has to be a previous conviction for a serious sexual offense, like one under Section 64 or 70. Second, that same individual must then commit a second offense under any of those same sections. Once both of these conditions are met, Step 3 kicks in, a mandatory enhanced punishment. And the punishment under Section 71, it is absolute and severe. The court has only two options: life imprisonment for the offender's natural life, or the death penalty. There is no provision for anything less. The legal message is crystal clear. Repeat offenders in this category are considered among the gravest threats to society. All right, now for a very important segment, especially for your prelims, comparing the new BNS provisions with the old Indian Penal Code, or IPC. Knowing the corresponding sections is essential because comparative questions are very common. Make sure you note this down. Section 70 of the BNS corresponds to the old sections 376D and 376DB of the IPC. And the core principle of common intention, which is the foundation of joint liability, was previously in Section 34 of the IPC and is now integrated right into the BNS. This table right here is extremely important for your quick revision. It summarizes all the punishments we've just discussed. To recap, for gang rape of an adult, it's 20 years to life. For a minor, it's life to death. And for a repeat offender, it's also life to death. Memorizing this table is going to be super helpful for your objective questions. So let's talk exam strategy for a second. In your prelims, you can expect direct, memory-based questions on these punishment terms. For mains, though, you need a deeper understanding. You should focus on practicing problem-based questions that test the application of concepts like common intention and joint liability. All right, for a final quick revision, let's just consolidate the key takeaways. First, Section 70 defines gang rape through the action of a group with a common intention. Second, Section 71 imposes the harshest punishment on repeat offenders. And third, for your exam, make sure you remember the two-part punishment structure in Section 70 and the landmark principles from the Nirbhaya case. And finally, we've seen that the BNS has incredibly strict provisions for these crimes. But that leaves us with a really important question to think about. While the law is stringent on paper, what are the practical and procedural challenges in implementing it and ensuring that swift justice actually reaches people on the ground? And that was our detailed breakdown of Sections 70 and 71. I really hope this has been useful for your exam preparation. For more judiciary, APO, and law exam-focused content, stay connected with Ganga Education. Today, we're going to discuss two very important sections from the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, Sections 72 and 73.
Now, these sections are all about protecting the dignity, the identity, and the privacy of victims. And let me tell you, if you're preparing for the judiciary and APO exams, understanding these is absolutely crucial. So before we jump into the technical details, let's start with a basic question. Why? Why does the law put such a strong emphasis on protecting a victim's privacy? What is the thinking behind these powerful legal shields? Well, the answer really gets to the heart of the matter. It's all about understanding the incredible pain and trauma that a victim goes through. You see, the law recognizes that if their identity becomes public, it can lead to terrible social stigma, harassment, and really profound psychological damage. So these sections are here to make sure that the victim doesn't have to suffer all over again, long after the crime was committed. And that brings us to our first layer of protection, Section 72. I like to call this the shield of anonymity. Think of it this way. This section is all about protecting the victim outside the courtroom. It specifically makes it illegal to print or publish anything that could reveal their identity to the public. Okay, so what kinds of cases are we talking about here? This is a key point for your exams. Section 72's protection applies to victims of specific sexual offenses, which are covered under Sections 64 all the way to 71. This includes really serious crimes like rape, gang rape, and sexual assault by someone in a position of authority. Now, for a court to convict someone under Section 72, 3 essential ingredients must be proven. First, there has to be some form of printing or publishing of information. Second, that specific information has to reveal the victim's identity. And third, the victim must be of a crime listed under those sections we just talked about, 64 to 71. All 3 have to be there. But of course, like many laws, there are exceptions. Section 72, subsection 2, carves out 3 very specific situations where disclosure is allowed. First, if a police officer reveals the identity but only in good faith for the purpose of an investigation. Second, if the victim themselves gives written consent. And third, if the victim is a minor or is of unsound mind, their next of kin can give permission to a recognized welfare institution. Let's use a practical example to make this crystal clear. Suppose a newspaper prints an article about a rape case and includes the victim's name and her photograph. That is a direct, open and shut violation of Section 72. The newspaper could face serious legal trouble for that. So, what are the consequences if someone breaks this law? Well, the punishment is quite serious. It can be imprisonment for up to 2 years, a fine, or even both. This really shows how much importance the law places on protecting a victim's anonymity. Okay, so that was the first shield, protecting the victim outside the court. Now let's move on to the second shield, which is Section 73. Let's call this one the shield of privacy. This section protects the victim's dignity and privacy inside the courtroom during the actual legal proceedings. Section 73 does this by introducing the concept of in-camera proceedings. Now, what does that actually mean? It's a legal term for a private trial. It means the public and the press are not allowed to be there. The whole point is to create a safe space for the victim, to shield them from public embarrassment and the trauma of retelling their story in front of a crowd. So, if the public can't be there, who exactly is allowed in the room during an in-camera proceeding? It's a very limited list. You'll have the judge and essential court staff, the parties to the case, that means the victim and the accused, and of course, their respective lawyers. That's it. It's a closed-door proceeding. Now, the punishment for violating Section 73 is the same as for Section 72, imprisonment up to 2 years, a fine, or both. But, and this is a huge but, there's a crucial exception here. Publishing the final judgments of a high court or the Supreme Court is not an offense. This makes sense, right? It ensures the trial is private, but the final legal decision becomes public for the sake of legal precedent. You know, the judiciary itself has been incredibly firm on this issue for a long time. In fact, let's look at a powerful quote from the Supreme Court of India that really sums up their stance. This quote comes from the landmark case of Nipun Saxena versus the Union of India in 2018. In this case, the Supreme Court made it absolutely clear that the media and all authorities must ensure the complete anonymity of victims. The court's directions in this judgment are really the spirit and guiding force behind what we now see as Section 72. And what about Section 73? Well, there's a landmark case for that too. In State of Punjab versus Gurmeet Singh, way back in 1996, the Supreme Court stressed that trials for sexual offenses should be held in camera. The court argued that this is vital to protect the victim's dignity and to encourage them to give testimony without fear. This judgment is really the backbone of Section 73. Now, for all you law students watching, it's really important to connect the dots to the old law.
Sections 72 and 73 of the new Bharatiya Nyaya Sanhita directly correspond to Sections 228A and 327, subsection 3 of the old Indian Penal Code. So these principles have been around, but they've been carried forward and reinforced in the new Sanhita. Let's just quickly put these two sections side by side to make the distinction super clear. Section 72 is about the victim's identity, their name, their photo. Section 73 is about the court proceedings, what happens in the trial. Their subjects are different, but their purpose is exactly the same: protect the victim. And as you can see, the punishment is also the same. They work together like two complementary shields. All right, let's talk exam strategy. For all you judiciary and APO aspirants, how will this show up on your papers? In the prelims, you can expect very direct, section-based questions. They might ask about the exact punishment or which specific offenses are covered. But for the mains, you need to be ready for problem-based questions, where they give you a scenario and you have to apply Section 72 or 73 to solve it. So, for a quick revision, just lock these three things in your mind. First, the section numbers. 72 is anonymity outside the court, and 73 is privacy inside the court. Second, the core concepts: protecting identity and keeping proceedings confidential. And third, know that they are extremely important for your exams. For more judiciary, APO and law exam-focused legal content, stay connected with Ganga Education. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.